or you can call in on 01582 481 810. Again, a reminder for yourself, this is a live show, and my name is Shakil Shah from Legalise It. So Legalise It, first to introduce myself, Legalise is a new solicitor's firm which has started operating in 2024, and I'm the director of this firm. We specialize in legal aid immigration, private immigration, private crime, and also if you have any criminal matter, we can accept your case under legal aid, and we can obviously grant you legal aid on all the matters, depending on your eligibility. So I will obviously repeat my introduction in Urdu for our listeners who want to understand better in Urdu, or who can it may feel easy to understand myself in Urdu. अस्सलाम वालेकुम listeners, मेरा नाम शकील शाह है और मैं लीगलाइज सोलिसिटर्स का ओनर और डायरेक्टर हूँ. आज का ये शो जो है वो इमिग्रेशन, लीगल एड और इमिग्रेशन, प्राइवेट इमिग्रेशन पे है. तो टॉपिक जो है वो आज के शो के हैं कि कौन कौन सी फंडिंग जो है वो आपको मिल सकती हैं, जो अगर आप कोई इमिग्रेशन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या कोई एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप मतलब फंडिंग ले सकते हैं, फ्री है या लीगल एड है या फिर आपको पे करना पड़ेगा. तो ये एक कॉमन क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं कि जी फीस कौन सी इन्वॉल्व होती है इमिग्रेशन केसेस में, और किस टाइप की फंडिंग अवेलेबल है लोगों के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं. सो आई विल बी गोइंग थ्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गोइंग थ्रू टाइप्स ऑफ फंडिंग. This is a frequently asked question from our clients, and so many people are expecting an answer for this question. So, of course, there is free funding available for immigration subject to eligibility. So, we are often asked about this through our office lines and also radio line. We'll go into detail for what funding options are available for you if you are looking to make a visa application. There are several options available for regarding your fee or our fee or home office fee. So the first option that is available is provided by the government is legal aid. Legal aid agency is a government department, and they issue funding to solicitors to represent clients. How it works is the solicitors are contracted with the government. So the government department is called legal aid agency. They give a contract out to providers or solicitors firm who can then supply services to clients and apply for legal aid on their behalf, subject to eligibility. If you are looking to make a visa application, you can contact us, and we are able to look into various options for you. In this country, legal aid is available for asylum cases and certain types of immigration cases. There is a misconception between people when they call us. They usually are told by people that there is no legal aid available. That is incorrect. There is legal aid available on certain type of immigration matters, including asylum cases. But it's available subject to eligibility. There are certain criteria to meet for legal aid. Now I will switch to Urdu mode to explain to my listeners what I've just told you in English. So हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं कि इमिग्रेशन की एप्लीकेशन में कौन कौन सी टाइप की फंडिंग जो है या कौन सी हेल्प मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं. तो ये सवाल हमें बहुत बार लोग पूछ चुके हैं, और अभी मेरे पास लिस्ट है क्वेश्चंस की जो लोग पूछते रहते हैं कि जी हमने एक वीज़ा एप्लीकेशन डालनी है, हमें नहीं पता कि लीगल एड अवेलेबल है कि नहीं. तो बाज़ लोग एडवाइस करते हैं कि लीगल एड अवेलेबल नहीं है, बाज़ लोग एडवाइस करते हैं कि लीगल एड अवेलेबल है. तो करेक्ट आंसर यही है कि लीगल एड अवेलेबल है इमिग्रेशन केसेस में भी. उसमें यह है कि अगर आप असाइलम एप्लीकेशन डालना चाहते हैं या कुछ सर्टन एप्लीकेशंस हैं जो एलिजिबल है लीगल एड के लिए. अब इसका लीगल एड जो है वो हुकूमत की तरफ से एक हेल्प करने के लिए एक डिपार्टमेंट उन्होंने खोला हुआ है जिसको लीगल एड एजेंसी कहते हैं. उस डिपार्टमेंट का ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं सोलिसिटर्स फर्म्स को कि आप हमसे फीस ले लें और
लोगों को फ्री एडवाइस प्रोवाइड करें। लकीली हमारी फर्म के पास जो लीगलाइज इट सोलिसिटर्स है, उनके पास लीगल एड का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, जिसमें हम असाइलम केसेस को और सर्टेन जो एलिजिबल केसेस हैं उनको लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको कोई भी लीगल एड कोई भी केस है, वो आप अगर चेक करना चाहते हैं हमारे साथ कि आप को लीगल एड मिल सकती है या नहीं, या आप अगर इंटाइटल हैं किसी भी टाइप की फंडिंग के लिए, तो हम आपको एक फ्री कंसल्टेशन दे सकते हैं और उसमें आपको हम बता सकते हैं कि जी आपका ये जो केस है वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो अभी मैं फंडिंग के ऑप्शन की तरफ जा रहा था। तो फंडिंग को क्वालिफाई करने के लिए उनकी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लीगल एड लेने के लिए भी आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है लीगल एड एजेंसी की। उसमें जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है फाइनेंशियल मीन्स टेस्ट। फाइनेंशियल मीन्स टेस्ट वो ये होता है कि वो आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस देखते हैं, आपके जो सेविंग्स हैं या आपके पास जो इनकम है, या फिर आपके पास कोई भी किसी भी तरह की इनकम जो आ रही है आपके पास, या किसी थर्ड पार्टी से आप ले रहे हैं। पहले वो टेस्ट करते हैं कि आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं फ़ीस या नहीं। और दूसरी चीज़ वो ये आप पूछते हैं कि जी आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग इनफ है या रीज़नेबल है, कि वो मतलब ऐसा केस है कि जो मेरिट पे पूरा उतरता है, या ऐसा केस है जो आपको मतलब लीगल एड के लिए एलिजिबल है। जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया है कि असाइलम केसेस जो हैं, उनमें लीगल एड मिल जाती है सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी यही है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते फ़ी, तो आपको असाइलम केसेस में गारंटीड लीगल एड मिल सकती है, क्योंकि असाइलम केस जो है वो मेरिट मीट करते हैं। इस तरह और भी बहुत टाइप टाइप के केसेस होते हैं जिनमें आपको लीगल एड मिल सकती है। फिर उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप होम ऑफिस की फ़ीस प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हम दूसरे ऑप्शन में देख सकते हैं कि एक ऑप्शन होता है फ़ी वेवर का, उसमें भी आपको फ्री एप्लीकेशन डालने का वो मिल सकता है कि आपकी फ़ीस माफ़ हो सकती है। अच्छा, तो अब so now I will turn back to legal aid tests. So there are two types of tests that they do when obviously they apply for funding. So first of all, if you apply for legal aid funding, first thing they look at is financial means. So financial means is that they have to look into your circumstances, your income, your saving, your assets, and everything you own. Um, I apologize for a second. I think I'm muted myself. In relation to the legal aid, your income and saving will be assessed to determine if you qualify for legal aid. There is a means test. Means test means we have to go through your circumstances, your finances, and see if you are eligible for legal aid. Then there is a merits test. The merits test is the case must have sufficient merits. What it means is that your case has a reasonable chance of success. When we deal with asylum cases, usually most of cases are asylum seekers. They are unaccompanied minors or people who have come into this country illegally. Um, in those cases, the legal aid, they meet the threshold of legal aid. However, there are some cases where legal aid is not available. So examples of application covered by legal aid. So I have few examples of cases um, which can be covered by legal aid. Now, first application is asylum application. When you claim for asylum or refugee status, the legal aid is guaranteed because you will get legal aid on asylum cases. However, if you are working or if you have some money or assets, then they will be taken into account. In relation to immigration bails, that's another. If you're applying for immigration bail and you are detained in an immigration center, um, that's also eligible application for a legal aid. You can make a legal aid application. Of course, we are one of the providers who provide legal aid for immigration matters. So you can contact us or likes of us, like any other solicitor who is on board of legal aid agency, and you can get legal aid for immigration bail. The third type of application um, that is eligible for legal aid is application made by victims of domestic abuse. These kind of applications, when somebody is obviously in a relationship and they suffer domestic abuse, they can apply for legal aid under those circumstances to get funding from the government. The solicitor will work for you for free.
However, they can make a claim to the legal aid agency to get the funding on your behalf, and he will cover all your costs, including the solicitor's fee, your barrister's fee, the court fees, and everything else that is included. Also, the fourth type of application which will be eligible for legal aid is applications made by victims of trafficking. Now, if somebody trafficked into a UK by someone or some gang or something, and they are the victims of modern slavery or trafficking, they can apply for legal aid, and it should be granted to them if they're making an application in the UK for asylum or any kind of application. The fifth application that's eligible for legal aid is proceeding before the Special Immigration Tribunal. If your hearing is taking place in a Special Immigration Tribunal, you are eligible for legal aid. You will be eligible for legal aid if you meet the requirements. And the lastly, applications made by children under 18 who are supported by or looked after by a local authority. Now, I will explain this in Urdu. So, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि जो लीगल एड होती है उसके 2 क्राइटेरिया होते हैं या 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मीट करनी पड़ती हैं आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होने के लिए। पहली ये है कि आपकी जो है वो आमदनी जो इनकम होती है वो या फिर सेविंग वो चेक करते हैं कि आपके फाइनेंसेस कितने हैं, आपके पास कितने पैसे हैं या आप कितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपके केस की नोइयत देखते हैं या आपके केस का देखते हैं कि आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना सीरियस है और उसके ऊपर रीज़नेबल है कि वो केस जीत जाएँगे या नहीं। ये जो असेसमेंट है वो ज़्यादातर सोलिसिटर्स करते हैं, हम भी करते हैं या हम जैसे कोई भी सोलिसिटर्स फर्म है जिनके पास लीगल एड का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके बिहाफ़ पे ये दोनों चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं और फिर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको लीगल एड मिल रही है इसमें और नहीं। अगर आपको लीगल एड मिल जाती है, तो फिर आपको जो आपके वकील की फ़ीस होती है, वो भी नहीं पे करनी पड़ती। अगर आप बैरिस्टर कोर्ट में ले जाते हैं, उसकी फ़ीस भी नहीं पे करनी पड़ेगी और अगर आप कोई एक्सपर्ट लेते हैं या कोई डॉक्टर की रिपोर्ट लेते हैं या जो भी लेते हैं, वो लीगल एड के अंडर कवर होगी। फिर आपको इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। मैंने 6 मिसालें दी हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जो लीगल एड के लिए क्वालिफ़ाई करती हैं या जिन पे लीगल एड मिल सकती है, जिन पे आपको फ्री वकील मिल सकता है अपनी ज़ुबान। तो उसमें पहली एप्लीकेशन है वो असाइलम एप्लीकेशन है। अगर आप इधर आते हैं और आप कहते हैं यूके में आते हैं और असाइलम की एप्लीकेशन डालते हैं जैसा कि वो जिसको हम अपनी ज़ुबान में सियासी पनाह कहते हैं। अगर आप सियासी पनाह की एप्लीकेशन डालते हैं या किसी भी रीज़न के लिए डालते हैं कि मुझे वापस जाने में खतरा है, मैं अपने मुल्क में नहीं जा सकता या जा सकती, तो मुझे इधर वीज़ा चाहिए। उसमें ये है कि आपको लीगल एड मिल सकती है, यानी कि आपको सरकारी तौर पर वकील मिल सकता है जो फ्री हो। हमारे पास जो है वो लीगल एड का कॉन्ट्रैक्ट है जो मतलब आम लोगों को लीगल एड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह सेवरल फर्म्स हैं लूटन में भी और नेशन वाइड जहाँ पे आपको लीगल एड मिल सकती है। तो दूसरी टाइप की जो एप्लीकेशन है वो है इमिग्रेशन बेल। अगर आप इमिग्रेशन में आप डिटेंशन सेंटर में हैं या आपको उन्होंने पकड़ लिया है और उधर बिठा लिया है इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में, तो आपको बेल अप्लाई करनी है। तो उधर भी आप फ्री सोलिसिटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन डालें किसी सोलिसिटर को कॉन्टैक्ट करें, अगर उनके पास लीगल एड वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको फ्री में आपकी बेल अप्लाई करेंगे। और जो तीसरी एप्लीकेशन है, वो है जो घरेलू झगड़ों में जो होते हैं, जो मतलब विक्टिम होते हैं, जब अगर घर में कोई झगड़ा हो जाए और उसमें अगर बंदा कोई वीज़े वाला है, उसके साथ कोई ज़्यादती हो जाए या ज़बरदस्ती हो जाए, तो वो अ, अपनी एप्लीकेशन डोमेस्टिक वायलेंस के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी लीगल एड अवेलेबल है। फिर इस तरह है कि अगर आप कोई विक्टिम है ट्रैफिकिंग के जिसको आप इस तरह करते हैं कि बंदे को अगवा करके ले जाते हैं या उसे स्लेव बना लेते हैं, उस तरह की एप्लीकेशंस हैं। अगर आप उसके विक्टिम हैं तो आपको लीगल एड उसमें भी मिल सकती है। जो 5वीं एप्लीकेशन जो है जिसमें लीगल एड मिल सकती है वो है जी अगर आपको स्पेशल इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के सामने अगर आपका केस पेश हो जाए, जिस तरह नेशनैलिटी के केस होते हैं या कोई सीरियस केस होते हैं जो मतलब नेशनल सिक्योरिटी लेवल के केस होते हैं, वो एक स्पेशल ट्राइब्यूनल या स्पेशल कोर्ट उन्होंने बनाया हुआ है। उसमें जो कोई केस ओपन होता है, उसको भी लीगल एड मिल जाती है। तो इसके अलावा जो है, कोई भी जो बच्चे हैं जो अगर 18 साल के अंडर जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर वो किसी भी मुल्क से आए हैं और इधर असाइलम अप्लाई किया हुआ है उन्होंने, तो उस सूरत में उनको भी लीगल एड मिल सकती है। अगर वो अप्लाई करें और अगर वो एप्रोप्रिएट सॉलिसिटर लें जो उनको फ्री एडवाइस करे और उनको अप्लाई करके दे, तो उनको भी लीगल एड मिल सकती है। यूजुअली ये बच्चे जो होते हैं वो
یا تو لوکل کونسل سپورٹ کرتی ہے انہیں یا پھر کوئی اور اتھارٹی جو لوکل ہوتی ہیں وہ انہیں اسپانسر کرتی ہے۔ تو جسٹ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ جو شو ہے یہ لائیو ہے، یہ لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہے یا کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی چیز ہے جو آپ نے ابھی تک جو میں نے کہی ہو، اگر اس میں سے کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آئی یا آپ اس میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر جو ریڈیو اسٹیشن کا نمبر ہے وہ ہے 01582481810۔ ہم اس وقت فیس بک پہ لائیو ہیں۔ اگر آپ لائیو کامنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی لائیو سوال کرنا چاہتے ہیں ہم سے، تو اس میں بھی آپ ایک لائیو میسج پوسٹ کر سکتے ہیں، تو ہم اس شو کے دوران آپ کا میسج پڑھ لیں گے اور اسے جواب دیں گے۔ اگر نہ ہو سکا تو پھر شو کے بعد ہم آپ اپنی ڈیٹیلز چھوڑ دیں ادھر ریڈیو شو کے ساتھ، تو پھر میں آپ کے ساتھ بعد میں بھی ہم آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے جو ہیں وہ جو بھی سوالات ہوں گے یا جو بھی آپ کی جو کوئریز ہیں ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ بھی اویلیبل ہے۔ اگر آپ واٹس ایپ پہ ہیں اور ادھر آپ ہمیں میسج کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 07779481822 نمبر ہے 07779481822۔ Now I will talk about privately funded applications. So there are some applications that are not eligible for legal aid. Example of those applications are family and private life applications. So ایسی بھی ویزا اپلیکیشن ہے جن پہ لیگل ایڈ اپلائی نہیں ہوتی یا ہم لیگل ایڈ نہیں دے سکتے یا آپ کو سروسز فری سروسز نہیں مل سکتی۔ ان میں پہلی اپلیکیشن جو ہے وہ فیملی اور پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشن ہے۔ تو پرائیویٹ لائف کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے جیسے اسپاؤس ویزا ہو گیا، وزٹر ویزا ہو گیا یا پھر کوئی بھی ایسی ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن ہے جو آؤٹ سائڈ اسائلم ہے، اس میں آپ کو لیگل ایڈ نہیں ملے گی۔ And then the second application is EU settlement scheme application. The EU settlement scheme application is applied under EU law. Again, there is no legal aid available for that kind of application. تو میں ساتھ اردو میں بتاتا چلوں کہ جو ای یو سیٹلمنٹ اسکیم ہے، جو یورپین اکنامک ایرا کی جو ہے وہ اپلیکیشنز ہیں جو ای یو کے ذریعے آپ ڈالتے ہیں فیملی ممبرس کے ذریعے، اس اپلیکیشن کے لیے بھی لیگل ایڈ اویلیبل نہیں ہے۔ اینڈ دا تھرڈ اپلیکیشن از برٹش سٹیزنشپ اپلیکیشن۔ اگین اگر آپ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین لے چکے ہیں اور برٹش سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی لیگل ایڈ فنڈنگ اویلیبل نہیں ہوگی، وہ آپ کو پرسنلی پے کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ اسائلم سیکر نہیں ہیں یا ریفیوجی نہیں ہیں یا کوئی ایسا نہیں ہے جو مطلب ہے کہ اگر آپ ڈسکریشنری لیو پہ نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کی فیس بھی پے کرنی پڑتی ہے، ہوم آفس کی فیس بھی اور سولسٹرس کی فیس بھی۔ Now we will move on to exceptional case funding. Exceptional case funding is when an application is not covered by legal aid. It may still be possible to apply for exceptional case funding if the person's human rights are breached if they did not have legal aid. اب جو ایکسیپشنل فنڈنگ ہوتی ہے وہ اس صورت میں دیتے ہیں کہ اگر آپ کو لیگل ایڈ نہیں مل سکتی لیکن آپ کا کیس ایسا ہے کہ وہ آپ کے ہیومن رائٹس جو آپ کے اپنے جو پرسنل رائٹس ہیں وہ اگر وہ بریچ کرتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویری لمیٹڈ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں لیکن آپ لیگل ایڈ ایکسیپشنل فنڈنگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ To demonstrate your eligibility for obviously to demonstrate that you are entitled to exceptional case funding, there are few things again you have to prove to the legal aid agency. Your solicitor has to work these things out that if you are eligible for legal aid or not. The first thing is legal aid is not first thing you need to prove is that legal aid is not available for your case. In normal circumstances, if you had applied for legal aid, it wouldn't be available for your case. Second thing you have to prove is that your case is strong enough. So we'll have to establish if your case is strong enough and it should be given exceptional funding. The third thing we need to look into is your financial eligibility for legal aid. Again, obviously, is another way of legal aid. However, this is only exceptional circumstances. And the fourth thing we need to look at is legal aid is necessary to prevent breach of human rights. Now, if you don't get legal aid and you can't afford to pay a fee, and if it's likely to breach your human rights, then the exceptional case funding should be granted.
we also have to prove that without the legal aid, it would be practically impossible to bring their case or proceeding, and it would be unfair. Now, this is again, if they couldn't, if someone is not able to make an application due to funding issues, and he is not entitled to the standard or usual legal aid, they can apply for exceptional case funding. अब मैं इसी चीज़ को उर्दू में बयान करना चाहता हूँ कि अगर आपको लीगल एड नहीं मिल रही, या आपका केस जो है वो आपको सॉलिसिटर ने जवाब दे दिया है कि आपको लीगल एड नहीं मिलती क्योंकि ये ऐसा केस नहीं है जिसमें आपको लीगल एड मिल सकती है, या आपको कानूनी जो फ्री जो सरकारी वकील होता है या कानून जो सरकारी लॉयर होता है वो मिल सकता है, तो फिर आप एक और किस्म की अप्लाई कर सकते हैं, एक और एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिसमें आपको फिर भी ये चांसेस होते हैं कि आपको हो सकता है कि आपको फंडिंग मिल जाए। उनमें अभी 5 चीज़ें हैं जो आपको प्रूव करनी पड़ती हैं, और वो ज़्यादातर सॉलिसिटर्स जो हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपकी क्या-क्या चीज़ है, वो आपकी एप्लीकेशन असेस करते हैं, फिर वो अप्लाई करते हैं। तो फिर लीगल एड एजेंसी जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जिसमें आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ एस्टेब्लिश करने के लिए या ये साबित करने के लिए कि आपका केस जो है वो उसको एक्सेप्शनल केस फंडिंग मिलनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि आपको प्रूव करना पड़ता है कि इस केस के लिए लीगल एड अवेलेबल नहीं है। अगर आप अप्लाई करें तो लीगल एड नहीं मिलेगी इस केस के लिए। दूसरी चीज़ आपको ये करनी पड़ती है कि आपका केस इतना मज़बूत है कि आपके केस को लीगल एड मिलनी चाहिए। आपको लीगल एड मिलनी चाहिए कि आपका केस मज़बूत है। आपके जो हैं वो चांसेस ऑफ सक्सेस जो हैं या केस विन करने के जो हैं वो चांस ज़्यादा हैं। इसलिए आपको लीगल एड मिलनी चाहिए। तीसरी चीज़ फिर फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है कि आपकी इनकम जो है वो आपको प्रूव करनी पड़ती है कि आप इफ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। उसका ये मतलब है कि आप मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ज़ाहिर है ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। चौथी चीज़ ये है कि अगर आपको ये अगर आपको लीगल एड नहीं मिलेगी, आपको लीगल एड की इतनी ज़रूरत है कि मतलब आपके ह्यूमन राइट्स जो हैं, वो ब्रीच हो सकते हैं। एंड तो जो जो अगली जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आपके पास कोई और रास्ता नहीं है कि आप मतलब लीगल एड जो है वो अब आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और ये आपके साथ मतलब अनफेयर हो जाएगा, ये आपके साथ ज़्यादती हो जाएगी अगर आपका केस कोर्ट के सामने ना गया या होम ऑफिस के सामने ना गया। तो ये 5 चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं, तो फिर आपको वो है कि लीगल एड एजेंसी फिर आपको फंडिंग दे देती है, जिसके बाद आपका सॉलिसिटर आपके लिए मुफ़्त काम करता है, और वो आपको मुफ़्त मशवरा देता रहता है। लीगल एड का सारा जो है उसका मतलब यही होता है कि आपको सारा कुछ फ्री में मिले। अगर आप लीगल एड के एंटाइटल हैं, तो फिर आपको सारी एडवाइस जो है वो फ्री में मिलनी चाहिए। और ये ऑब्वियसली ये क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लीगल एड मिल जाती है, उसके बाद आपको किसी को भी पे नहीं करना पड़ेगा। चाहे सॉलिसिटर आपको कहें भी कि आपको ये चीज़ पे करनी है, तो आपको नहीं पे करनी चाहिए। Now we will move on to fee waivers. So if you don't get legal aid, if you don't get exceptional case funding, if you can't afford to pay privately, the last option you have is fee waiver. Now, as obviously this is first of the half of the show, which is about to end, so I will be resuming my show in 5 minutes after the commercial break. So there is an advert coming up. So I will be getting back into my fee waiver topic after the break. So please stay tuned and stay connected. And if you have any messages or any questions, you can call us on 01582 481 810. लिसनर्स, अभी हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, और ये कमर्शियल ब्रेक तकरीबन 5 मिनट की होती है। उसके बाद हम दोबारा आपसे फिर लाइव आएंगे, और फिर आपको हम फ़ी वेवर के बारे में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि फ़ी वेवर क्या होता है और ये अवेलेबल है। इस दौरान अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज और कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
that is responsible for the UK visa system. So e-visa is an electronic visa, which means that your visa will be online now. So you don't have to carry a physical visa or a card to show the authorities or anyone to prove that you have a right to stay in the UK. You can simply log on, and the Home Office can log on, or even a border control, they can log on, check your status. You can give a share code to your employers or your landlord to prove that you have a visa. Now, we have been asked by so many people that my visa is expiring on 31st of October 2024. So every BRP card that has been issued, or BRC card, has a same expiry date, which is 31st of December 2024. Be it that your visa is expiring next year or next month or in 2 months or 3 months, everyone will have same expiry date for the BRP. Some people get confused and they start to apply for extension for their visa because they think their visa is expiring. No, that's not correct. Your visa is not expiring. To check whether your visa is expired or not, or when your visa is expiring, you have to uh, check the letter with the initial grant of the visa. If you check your letter, it will say when, it will say, or email, it will say when your visa expires. Or if you make an account on UKVI website and then you register yourself for e-visa, they will show you a date when your visa expires. And the e-visa deadline is 31st of December. So everyone needs to get into applying for e-visa, otherwise they will lose it, and they will have struggle to apply later on. Now, you have to create an account using your biometric permit. You go to UKVI website, create your account with your details. Then there's an app that you link your account to the phone. Once you link your account to your mobile phone, then you can scan your face and take a selfie, and then you can also scan your BRP card with your phone. It will detect the chip and it will get your information from there. And then, if it's very simple, if you follow the steps, and it will take half an hour maximum to get the e-visa sorted. And if you need help, or if you are stuck, because many people get stuck on these kind of things, if you are stuck, you can call us and we can assist you for free of charge. So we are obviously making an exception for people who are doing e-visa. We are able to assist people free of charge on e-visa, as obviously there is no fee for the government. So I personally would offer the service that, look, I will help you do the e-visa. If you need help, I can obviously use my own time and assist you to switch your visa to e-visa. That's only a limited offer for November, because December is a busy month. So we can only do it within November. If anyone calls us, we are able to assist him or her free of charge. Now we are getting closer to the end of the show. I wish it was a longer show, but we are under time, and it's, I think, a couple of minutes left to end our show. I'll I'll go into Urdu mode once again. अगर आपको ई वीज़ा अप्लाई करना अगर आप ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि यूकेवीआई की वेबसाइट पे जाके आपको अपना फ़ोन जो है वो फ़ोन नंबर और ईमेल लिंक करनी पड़ेगी। फिर आपको वो गाइड करेंगे कि आप कैसे उसमें जो है अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, अपना फ़ोटो ले सकते हैं उसमें और अपना फेस स्कैन कर सकते हैं। फिर आपको वो कहेंगे कि आप अपना जो कार्ड है वो फ़ोन के नीचे रख के स्कैन करें, और फिर आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा और आपको वो डेट मिलेगी जब आपका वीज़ा एक्सपायर होता है। बाज़ लोग यही समझते हैं कि जी वीज़ा, सबका वीज़ा जो है वो दिसंबर में एक्सपायर हो गया है। ये जो है ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो वीज़ा जो है वो उसकी हर बंदे की एक यूनिक वीज़ा एक्सपायरी डेट होती है, हर बंदे की अलग होती है, किसी बंदे की भी मोस्ट ऑफ केसेस अलग ही होती है। लेकिन ये जो बीआरपी की एक्सपायरी डेट है, ये सबकी सेम है। जिस बंदे के पास भी जो कार्ड है वीज़े का या स्टैंप लगी हुई है पासपोर्ट पे, वो जो है वो उनको दिसंबर से पहले-पहले रिन्यू करना पड़ता है और करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये है कि बाद में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, आपकी जॉब में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, अगर आपको सफ़र करना है अर्जेंटली, उसमें मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये मैं अभी जैसे कि बता रहा था कि अगर आपको हेल्प चाहिए, तो हम आपको मुफ़्त में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये एप्लीकेशन ई-वीज़ा रजिस्टर करवाना है, तो हम नवंबर के महीने में हम एक ऑफ़र करते हैं आपको, कि मैं पर्सनली जो है आपको हेल्प करूँगा।
آپ کے جو ہیں وہ ای ویزا جو اپلائی کرنا ہے، ہوم آفس کی تو فیس نہیں ہوتی اس کی، لیکن اگر کوئی بندہ جو ظاہر ہے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کو ظاہر ہے آپ نے آورلی ریٹ چارج کرنا پڑتا ہے، اور سولسٹرز کا آورلی ریٹ یوزلی 200 250 ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو میں یہ آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نومبر کے مہینے میں ہم جو ہے ہمارے آفس میں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں تو ہم آپ کو یہ فری سروس دے سکتے ہیں۔ تو ہمارا نمبر جو ہے وہ 01582499999، دس 01582499999۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو فری ایڈوائس کر دیں گے، اور ویسے بھی ہماری جو کنسلٹیشن ہے وہ 20 منٹ کے لیے فری ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے آن دا فون، ہم آپ کو کال پہ جو ہے وہ 20 منٹ کے فری سروس دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ایک میٹنگ چاہیے تو پھر اس کا آپ کو اس کا پے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم ان آفس میٹنگ ہوسٹ کرتے ہیں پھر اس میں ظاہر ہے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، جو آپ کی چیزیں، آپ کی ساری کہانی سننی پڑتی ہے، آپ کی چیزیں چیک کرنی پڑتی ہیں، پھر آپ کو ایڈوائز کرنی پڑتی ہے، تو اس کی ظاہر ہے کاسٹس آتی ہیں۔ اگر آپ ہمیں یوز نہیں بھی کرنا چاہتے، آپ ویسے ایڈوائس لینا چاہتے ہیں، سیکنڈ اوپینین لینا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ آپ کو فری ایڈوائس کر دیں گے۔ اور پہلے 20 منٹ فری ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کا کمپلیکس کیس ہے تو ہم یہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں سارا کچھ بتائیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ اچھا جو ہے سولوشن بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور ان سرکمسٹانسز میں کیا کرنا چاہیے۔ I have covered everything in relation to e-visa and funding. I think now we are towards the end of our show. So this was Ask Your Lawyer show, and this was an immigration show. I will come back another day with a crime show, and then I will advise you, or I will help people with the if they are involved with the police, or if they have any criminal matters, we are happy to assist them as well. So I think there's 30 seconds left. So I will be saying goodbye for now. And obviously, in a few weeks' time, I'll be coming live again. And in between, if anyone needs to speak to me, they can contact Inspire FM, and they will pass the details on. Or you can get my details off our website or social media, or you can call me on 01582499999, 01582499999. Thank you very much for listening to my show. If you have any questions, please call us. Thank you very much. Jazakallah. Assalamu alaikum.